জয় গুরু। অন্তর দেবতা আসহে হৃদয় সিংহাসনে বস, অন্তর দেবতা আসহে হৃদয় সিংহাসনে বস, তুমার পাশিরি নয়নে হেরিবে, তুমার পাশিরি নয়নে হেরিবে করুণাময়, উঠিব মন পরাস, উঠিব মন পরাস, হৃদয় দুয়ার খোলিবে, কেতে আশা মনে করি, হৃদয় দুয়ার খোলিবে, কেতে আশা মনে করি, বসিয়াছু পরা জাগর জানিহে, বসিয়াছু পরা জাগর জানিহে করুণাময়, মুখে জয় গুরু বলি, মুখে জয় গুরু বলি, রাগ সহাগ যেতে আই কিছু দুরগতে, রাগ সহাগ
যেতে তাই পিছি জগতে ধারি দেবী তুম ত্রিপদ প্রান্তে ধারি দেবী তুম ত্রিপদ প্রান্তে করুণাময় প্রেম ভক্তি সহিতে প্রেম ভক্তি সহিতে কেতে কাଳୁ ଏହି ପରି নামটিয়া সরা করি কেতে দে নামটিয়া সরা করি অসরা সর পসরা ধরিলে অসরা সর পসরা ধরিলে করুণাময় বসিଅছু অনুসরি বসিଅছু অনুসরি সংসার জঞ্জালে পড়ি দুঃখ তাপে মরে ঠড়ি সংসার জঞ্জালে পড়ি দুঃখ তাপে মরে ঠড়ি চাহু চাহু বেলা যাଉଛି গতি হে চাহু চাহু বেলা যাଉଛି গড়ি হে করুণাময় অবসাদ আসে ফেরি অবসাদ আসে ফেরি তুমি মো জীবন বন্ধু হে মন আকাশ ইন্দু তুমি মো জীবন বন্ধু হে মন আকাশ ইন্দু তৃষা কাতর মু ছাতকি পরা হে তৃষা কাতর মু ছাতকি পরা হে করুণাময় ঢাল কৃপাবারি বিন্দু ঢাল কৃপাবারি বিন্দু শরণ রক্ষক বলি তুম নামে পড়ে হুরি শরণ রক্ষক বলি তুম নামে পড়ে হুরি মো লাগিতে নাম न जाओ भूली है मो লাগিতে नाम न जाओ भूली है করুণাময় ঘৃণা কর পদে অড়ি ঘৃণা কর পদে অড়ি অন্তর দেবতা হাস হে তুদ সিংহাসনে বস তুমার রূপ শ্রী নয়নে ঘেরি হে তুম রূপ শ্রী নয়নে ঘেরি হে করুণাময়
জীবন পরাশা বন্ধন মোচন উজ্জবর গুণহীন गुणाधिपति भवभीरुजने प्रणमामि गुरुं शिव प्रणमामि गुरुं जय गुरु जय गुरु जय गुरु। कोटि काम जीणा ठाणे कि मन हरा कोटि काम जीणा ठाणे कि मनोहरा दरसने सबु दुख दरसने सबु दुख घुंचिला मोरा दरसने सबु दुख घुंचिला मोरा कोटि काम जीणा ठाणे कि मनोहरा कोटि काम जीणा ठाणे कि मनोहरा सुरंग पद जुगाड़ दर फुटंता कमल सुरंग पद जुगाड़ दर फुटंता कमल मन भृंग गला लाखी मन भृंग गला लाखी होइबी भोरा मन भृंग गला लाखी होइबी भोरा कोटि काम जीणा ठाणे कि मनोहरा कोटि काम जीणा ठाणे कि मनोहरा कांति चंपक बराण अंग गंध मोहे मन कांति चंपक बराण अंग गंध मोहे मन बक्ष कुल मिछि चारु बक्ष कुल मिछि चारु जोरा कुंतल बक्ष कुल मिछि
ଝିଣା ଠାଣି କି ମନୋହରା କୋଟି କାମ ଝିଣା ଠାଣି କି ମନୋହରା ଜଳଦ ଗମ୍ଭୀର ବାଇ ଧନ୍ୟ ହେଲା କାନ ଶୁଣି ଜଳଦ ଗମ୍ଭୀର ବାଇ ଧନ୍ୟ ହେଲା କାନ ଶୁଣି ସରଜିଲା ହୃଦ କୋଣେ ସରଜିଲା ହୃଦ କୋଣେ ଦିବ୍ୟ ଝଙ୍କାର ସରଜିଲା ହୃଦ କୋଣେ ଦିବ୍ୟ ଝଙ୍କାର କୋଟି କାମ ଝିଣା ଠାଣି କି ମନୋହରା କୋଟି କାମ ଝିଣା ଠାଣି କି ମନୋହରା ସତେ ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ହେବ ନୟନ ଦେଖୁଥିବ ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ହେବ ନୟନ ଦେଖୁଥିବ ସନ୍ତାପ ହରା ରୂପ ସେ ସନ୍ତାପ ହରା ରୂପ ସେ ନିଶି ପାସର ସନ୍ତାପ ହରା ରୂପ ସେ ନିଶି ପାସର କୋଟି କାମ ଝିଣା ଠାଣି କି ମନୋହରା କୋଟି କାମ ଝିଣା ଠାଣି କି ମନୋହରା ଜୀବନର ବିଳାସ ତାପଦ ଯୁଗ ପରସ ଜୀବନର ବିଳାସ ତାପଦ ଯୁଗ ପରସ ପିଣ୍ଡରୁ ପରାଣ ହେବା ପିଣ୍ଡରୁ ପରାଣ ହେବା ବେଳେ ବାହାରା ପିଣ୍ଡରୁ ପରାଣ ହେବା ବେଳେ ବାହାରା କୋଟି କାମ ଝିଣା ଠାଣି କି ମନୋହରା କୋଟି କାମ ଝିଣା ଠାଣି କି ମନୋହରା କୋଟି କାମ ଝିଣା ଠାଣି କି ମନୋହରା ଦରସନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦରସନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା ମୋର ଦରସନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା ମୋର କୋଟି କାମ ଝିଣା ଠାଣି କି ମନୋହରା କୋଟି କାମ ଝିଣା ଠାଣି କି ମନୋହରା। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। निगम उपदेश पेज 207 208। Excitement is detrimental. Nobody has any right to extinguish individual liberty
So how does it benefit you by shifting all blame to others, claiming yourself completely clean? You have voluntarily come here and you can also leave your own accord. But if you go on doing out excitement, anything that seems bettable at the spur of a moment, you should never hope to deploy your life. I always tell you as your well-wishers, that momentary excitement and ego are highly harmful. Don't spoil your time in clamor and conflict. Instead, it is better to select your respective favorable fields. Those who do not gain strength in mind and heart in any way will die every moment in the fire of doubt and confusion. There is, however, no reason for them to commit suicide untimely. Can't you find out in this vast earth any place congenial to you? I ensure you that faith, strength, and confidence will ensure if you come out with firm determination, God will then eagerly run to help you. But you have to remember one thing, that there should be no hypocrisy in your actions. You will never gain anything from lies and hypocrisies. Every time I tell you one thing, but you conceal yourself before me. Ultimately, when you are unable to maintain balance of mind, you exhibit your perfidy. Then you have quit this place and admit utter shame. You ponder over it and tell me if it will hurt me or not. I love you. It is not due to my attachment. Such love will awaken yourself. There are many devotees among you who have been progressing amazingly on the path of spiritualism, not due to any sadhana, but due to their deep love for me. They have told it to me. One may adopt any path with inevitable yearning and quest for truth. My profound love and caring attention will always dwell on him, on whatever path he may go. It is because of realizing truth you can better comprehend and essence of my words and advice. Moreover, it is certain that the doubts of our mind are not completely removed what we understand with our wit and intelligence. But all doubts are wiped out when one realizes truth through his own experience. While staying with me, if you experience deep yearning for truth, it will be understood that there is meaning in your taking shelter under me. I repose this hope on you. I shall get immense pleasure when I shall find that you are progressing on the path of truth. Jai Guru. जय गुरु साधु संघ पुरी साधु संघ 859 संघ पूजा सेशन रिपोर्ट डेट एंड टाइम April 16, 2023 7:15 to 12 p.m. Eastern. alias Vijay Devidas Bhai Subhut Bhai. Adivasi Puja was held at Smriti Mandira at 7 p.m. Eastern. It was attended by some Bhais and Mahas at Smriti Mandira and some Bhais. Attendance kit is available in the member section of the Ramsar's website. First session, April 16, 2023, 7:15 a.m. to 8:45 a.m. Eastern. The morning session of the puja started at 7:15
with Pratiksha. Rashmi Chaudhary Ma started the Pratiksha with the song Deva Dejawa Savani, and then Gyanadai continued Pratiksha, Priyasam, Thakur Sujata Ajire, and Anandamaya, Nimanandam Joya till 7:30 a.m. During that time, all devotees attended puja either at Smriti Mandira or via teleconference. At 7:30 a.m. Eastern, Asana Mandira curtains were opened and Sanjiti Vai performed the Arati. Then Sita Raima sang the Bandana, Bandari Kuricharana, and Sutta Bandana. Rajabhai read the Parichaputra followed by Sumrim Pathana. Then Amitabh Bhai read the Sangha Sevaka 48 third part, Bandana, Pathana, and Pathana Gankapati. After the reading of Sangha Sevaka, Sandeep Bhai read the Suguru Vita Shloka 27. Then Devidas Bhai invited Sisi Thakur Bhai and young students to attend the second session. The first session was concluded with Joy Guru Kirtana. After the first session, Bali Bhagavad offered to Sisi Thakur and followed by Prasad. Second session, April 16, 2023, 9:45 a.m. to 12 p.m. Eastern. The second session of the puja started at 9:45 a.m. with Avahana. Vrindavan Bhai sang Sara Jivan Rajatar Shakti, and Puja Ma sang Manarar Thakurani Manakatha Vihenakara. This was followed by Bhava Bandhana Machana, Pranamagana, and opening the Asana Mandira curtain. Shivendra Bhai sang Bandhana, Veja Akhili Jari Purthana. Then Vinay Bhai read Nigama Police of page 206 to 207, Attainment of Truth. Then Tilnath Bhai read the minutes of the last puja. It was followed by reading of C.C. Thakur Mahatma book and summary from page 91 to 96, which is Priya Bhai and Swita Bhai sang prayer to me Hato Bhajina. This was followed by reading of Saraswata part 1 by Kishore Bhai. Gyanabhai led the question and answer session and the continued reading morning song Seva book. The young aspirant session was started with a song Tuma Puja Fulla by the Thakur sung by Anhik. Then Bhakti led the discussion in the young aspirant session. Ija, Devidas Bhai and Subhat Bhai did their Bhagavani Seva, followed by invitation for Madhyana Bhagavad to Sisi Thakur Maharaj. And Lipsita Ma invited for Vakhyapika Puja on April 22nd, 2023. Then Gyanabhai invited for his Asnavastika Show Puja on April 22nd, 2023. Then Yukta, Amnu Bhai and Vishwa Ranjan Bhai invited Sisi Thakur to the Sangha Puja to be held on April 23rd, 2023. Subhat Bhai prayed for forgiveness when Thakur Bhai Janmas and his friends. The session was concluded with Vidayapatna song by Devashish Bhai, and Asana was closed with Joy Guru Mahanam Kirtan and Pranam. Vishwa Bhai took the attendance of all Bhai Janmas Putraji and Madhyana Bhagavad offered to Sisi Thakur, followed by Prasad Swaram. Sisi Thakur transferred Sridhar Subhat Bhai Devidas Bhai. Jai Guru. Jai Guru. Sisi Thakur Mahatma, page 96. तत्पर द्वितीय दुकानटी को दिवाको भद्र लोकटी ठिया अभिनंदन पूर्वक आमको बसाई पान तमाकु देला एवं अति विनीत भाव में गोटे टंका दे निजको कृतार्थना समान जाति समान व्यवसाय जड़े अन्यर प्रतिवेशी जड़े आमको भंड भाविला अन्य को महासाधु मनक सम्मान देला आज भिक्षा कार्य समाप्त कर कौन प्रकार 10 टंका धरी फाल्गुन मास शेष को घर को आसिलु दियो से सामान्य किसी मिला तथापि मन में तृप्ति आसला ना अवश्य ठाकुर वाक्य प्रभाव में सेपरी कौन उद्वेग होना किंतु सम्मुखें एत बड़ विराट कर्म एपरी सम्मिलनी भक्त मान निमंत्रण पर्यंत कर सारा पर कर्मण्य बाधकार स्त्री महाफल सुखदार्चन कही निश्चिंत रहीगला ना यही समय नर्मदा आत्म जन सहित श्रीहट सहर को जाई संग्रह करते किंतु ताहा आसान रूप नुहे शेष समस्त गुरु भाई माने आलोचना करी गण्यमान्य बड़ लोक मान धरलु आम दल नर्मदा बाबू गगन बाबू यही शरण लोक उपरोक्त आलहीनवासी श्रीजुक्त दुर्गा कुमार गुप्त चौधरी आद्यपाश निवासी शिवानंद वंशधर श्रीजुक्त इंद्र कुमार सेन अधिकारी श्रीजुक्त कृष्ण केशव सेन अधिकारी दस कहानी निवासी श्रीजुक्त गिरीश चंद्र भट्टाचार्य और सातगांव निवासी श्रीजुक्त रतीश चंद्र दत्त चौधरी प्रभृति आमर उद्देश्य और कार्यबली
विशद भाव बुझाई दे उद्भूत व उत्साहित कलु। उक्त भक्त दुर्गा कुमार बाबू व कृष्ण केशव दास ठाकुर शिष्य नहले पूर्वर ठाकुर को श्रद्धा भक्ति करती एवं उत्सव मानकर अर्थ साहाय्य करी आमको उत्साहित करती। महानमती आश्रम भुवन ब्रह्मचारी को डकाई गगनदा मध्य कार्य जगत वर्तमान बेस आशानुरूप अर्थ संग्रह करने को लगिला। तेबे अधिकांश अर्थ प्रकृति भिक्षा लब्ध नुहे, बड़ लोकों मर्यादा व विक्रय लब्ध। आश्रम प्रतिष्ठा, ऋषि विज्ञापन स्थापन, देशर उपकार इत्यादि वक्तृतार जो मानकर मन तरले नहीं सेमानंक आगरे यही सब लोक हाजर हेले मर्यादा रक्षा निमित्त किसी देवाक बाध्य हुअंती। अन्य कथा कौन कहवा। दिने जड़े पदस्थ व उपार्जनक्षम भद्रलोक प्राय 500 टंका खर्च कर आमको पेटे मिठा खुआइबा परे मात्र 2 टंका दे मुह उपर कहले दुर्गा कुमार बाबू न आसते एसबू कम किसी कर न था। बैशाख मासरू गगनदा और भुवन ब्रह्मचारी सहित मिसी नियमित भिक्षा आरंभ कली। केबे केबे शशिधा प्रकृति जाती, कौन दिन बाद जीव नहीं बोली संकल्प कलु। दुर्योग बा शरीर सुस्थता विशिष्ट जो दिन अन्यत्र जापे ना से दिन निकटवर्ती 2-4 घर चाउल भिक्षा कर आनी विक्रय कर नियम रक्षा करुली। दिने शशिधा भुवन ब्रह्मचारी सहित सूर्यपार्श प्रभृति स्थान भिक्षा कर फेर अनेक रात्र होगला। बाटरे शशिधा को छाड़ी मु ब्रह्मचारी आम पुष्करणी पाखक आसी एते राति घरे आलुओ देखी एवं लोकों पाटी गल शुणी टिके ठिया हेलु। पाख घरे काली पूजा होउथिबा मन करी से राति गगनदा घरे जाई शोइलु। परदिन घर को आसी जानिली जे काली पूजा नुहे, मोर द्वितीय पुत्र बनमाली भीषण असुस्थ हो रही। ताहार सेवा शुश्रूषार रही 2-3 दिन भिक्षा भिक्षा हो पारे ना। यह भितर जड़े दिने सकाले दुर्गा कुमार बाबू मत डकाई पठाई खबर देले से 7 गाँव भग्निपति रतीश बाबू को डकाई सहित मोर आलाप परिचय कराई से स्थान में भिक्षा सुविधा हम। पुओटी अवस्था से दिन भीषण खराब, तेणु चिंता करने को लगिली पुओटी को छाड़ी जीवी किपरि। पुनश्च रतीश बाबू सहित आलाप परिचय नहेले 7 गाँव भिक्षा कर संपूर्ण वृथा। पूर्वर 7 गाँव निवासी अन्य जड़े बंधु पत्र जानिले जे सेठा को भिक्षा करने गले केवल ताहार लज्जा हम सार हम। लोकों पाखरे पुओटी को छाड़ी यथाशीघ्र रतीश बाबू सहित साक्षात कर आसी देखिली जे तार बेसी समय बाकी नहीं। मृत्यु पूर्व बाबा बोली डाकी टिके दूध पीवा मागी एवं दूध पीवा पर अवस्थार परिवर्तन देखी मरब ना बोली भावी रतीश बाबू निकट को जाइली। सब ध्यान शेष कर उपरबेला पोखरी पाखरे बसी तमाकू खाऊा समय भुवन ब्रह्मचारी और गगनदा आसिले। अन्य मनस्क रहिले पुत्र सख विशेष बाध्य ना बोली से आगामी काली भिक्षार्थे 7 गाँव जावाक प्रस्ताव देले। परदिन 7 गाँव जाई 3-4 दिन मध्य सेठारे भिक्षा शेष कर प्राय 65 टंका संग्रह कर किछि दिन भिक्षा बंद रखी आषाढ़ मास आरंभ भुवन ब्रह्मचारी महान मयानमती आश्रम को चलीगली। सेठारे जाई देखिली माटी हाणी रोषई घर सम्मुखस्थ अगणाटी को समतल कर कार्य नियुक्त हो सेठारे किछि दिन आनंद कटाई। किछि दिन पर गृह को फेरी देखिली जे माँ आमसाय आक्रांत, शीघ्र भिक्षा निमित्त बाहरी पारि ना बोली मोर मन है। यही समय बंधु कामिन सेन प्रस्ताव देले आमे निजे महाकुमार इंद्रेश्वर परगणार अनेक शिक्षित और धनी भद्रलोक बास करती। सुतरां सेठा को गले प्रचार और भिक्षा 2टी कार्य भल भाव हो पार। उच्च स्थान हेतु वर्षा काल सेठा को यातायात कौन असुविधा हो ना। माँ देह सामान्य सुस्थ होबार 2-3 दिन भितर 2 जन इंद्रेश्वर यात्रा कलु। यह भिक्षा कार्य आरंभ गोटे विशेष लक्षण परिलक्षित होती। जो स्थान को विशेष आशा नहीं जाइछु सेठारे प्रथमे धक्का खाइछु।
ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ ଉଦାସୀନ ରହି କେବଳ ସେଠାରେ ସେବକ ଭାବରେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଇଛୁ ସେଠାରେ ଆଶାତିରିକ୍ତ ପରିଣାମ ଲାଭ ହେଉଛି। ଏଠାକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ପ୍ରତାରକ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମୁହାଁମୁହିଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହା ହେଉ ଅବଶେଷରେ ସେଠାକାର ଭୂତପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଶେଷ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକପ୍ରିୟ ବା ସ୍ୱଧର୍ମରାଗୀ ଆମର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଳିତ କୁମାର ଧରଙ୍କ ଅଯାଚିତ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ପ୍ରାୟ 40 ଟଙ୍କା ସଂଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ମାଙ୍କର ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରଖି ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ମୟନମତୀ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀହଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଏତିକିରୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବମୋଟ 1,500 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ନବମ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଗୃହକୁ ଫେରି ଦେଖିଲି ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ନିକଟ ପ୍ରାୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଭାଇ ପ୍ୟାରି ଜ୍ୱରରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ପରଦିନ ମତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଆକ୍ରମଣ କଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାମରେ ନାମ ଜପ କରୁ କରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝିଲେ। ଏହି ଅଧମ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଥାଶକ୍ତି ପ୍ରଦତ୍ତ ପାରିତୋଷରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କ୍ଷୌର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ବହୁଦିନରୁ ନାପିତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ବିବାହ ପ୍ରଭୃତି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ଜଣାଇ ସମାଜର ନେତା ଓ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଏହି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଏହା କରିଥିଲେ। ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ନାପିତ ବର୍ଜନରେ ପ୍ରୟୋଜନିତ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ଏହି ନାପିତ ବର୍ଜନ କର୍ମଟି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଅନୁମୋଦିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତି ବିଶେଷ ପ୍ରତି ନିରର୍ଥକ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ନାପିତହୀନ ବୋଲି କାହାରି ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚିତ ବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତୃଯୋଗ ପରେ ସହସା ସମାଜପତିମାନେ ସଭା ସମିତି କରି ଆମକୁ ନାପିତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଆମେ 2 ଭାଇ ଜ୍ୱରରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ସୁତରାଂ ସଭାକୁ ଯାଇ ଅମୂଳକ ସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବାକୁ ବା ତ୍ରୁଟି ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସି ଗୃହୀତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମର୍ମ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆମକୁ ନାପିତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନତୁବା ସମାଜ ବର୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ହିତକର ଓ ସହଜସାଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲୁ। ଫଳରେ ଗୁରୁ ଓ ସମାଜର କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ନେତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମାଙ୍କର କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ସବ ବାକି ରହିଗଲା। ବିପକ୍ଷ ଦଳ ଆମର ବ୍ୟବଚାର ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପତ୍ର ଦେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଥରେ ଠାକୁର ଭୁବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗଟି ଆମର ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଅବୈଧ ମନେକରି ଆମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଜ ଲୋକକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛଳନାମୟ ଭଗବାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଠାକୁର ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରି କେବଳ ଯାହା ରଟେ କିଛି ନା କିଛି ବାଟେ, ଯାହା ପ୍ରକଟ ହୁଏ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ସତ୍ୟ ଥାଏ, ଏହି କଥାଟି ଲେଖି ଆମକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ପରେ 8 ନମା ଆଜ୍ଞା ଜୟ Then when we went to the second store, the gentleman there stood up and gave us pan and tobacco and also gave 1 rupee. Both were from same caste, same business, but both were very different. One of them saw us as fraud and the other treated us as a saint. We came back from Ajmeri during Phalguna after collecting around 10 rupees. Although we got something, it did not give us peace of mind. Although we did not face any issue due to blessings of Sri Thakura,
but we had such a big task in front of us that we could not sit in peace. At that time, Narmada Da also collected something with Atmananji, but it was not enough. At the end, we all discussed and approached the rich men. Narmada Babu and Gagan Babu were part of it. We spoke to Sri Durga Kumar Gupta Chaudhary from Alahani, from Sri Indra Kumar Sen Adhikari from Adyapata, Sri Krishna Kesav Sen Adhikari, Sri Girish Chandra Bhattacharya from Dasa Kahanya, and Sri Ratish Chandra Das Chaudhary from Satgaon, and explained our need and our procedure. Durga Kumar Babu and Krishna Keshav Babu knew Thakur Maharaj and have helped us in the past. Bhuvan Brahmachari from Mayanamati Ashram also joined us after being called by Govanda. We were able to get more financial help now. Although all these were not alms, but financial support from rich people. Many people are some help when requested odds of building a monastery, a spiritual school, and helping the nation. On one occasion, one gentleman gave us food worth 5 rupees to eat, but just gave 2 rupees for the cause, saying that he would not have paid anything had Durga Kumar not come with us. I started going for collecting financial support with Govanda and Bhuvan Brahmachari after Baitakaman. Sometimes Sida also join us. We promised that we will try every day. We could not go due to some problem or sickness with nearby houses and made money by selling it. One day it became late night while returning from Surya Pasha with Sasida and Bhuvan Brahmachari. On the way we dropped Sasida, and while coming we stopped near our lake as we heard noise from the nearby house. We thought there is Kali Puja in the neighboring house, so we stayed at Goganda's place. But the next morning I realized that my son is not well. Because of this, I could not go out for next 2-3 days. On one of the days, Durga Kumar sent me a message that he has called his relative Atish Babu. Once he introduces me to him, I can ask for financial assistance. My son was very sick that day. I got worried. How can I leave my son and go to meet Ratish Babu? Otherwise, visiting Satgaon will be a waste. I have heard from one of my friends that it is not easy to get financial assistance in Satgaon. I left my son with the morning women folk to meet Ratish Babu, and when I returned, I saw that my son is about to die. My son had asked for milk, and thinking that his condition will improve, and that is why I went to meet Ratish Babu. After doing his last rites, I was having tobacco when Bhuvan Brahmachari and Gaganda came. They suggested that we should go to Satgaon as it will keep me occupied and help me forget my pain. Next day, we went to Satgaon and collected around 65 rupees and returned after 3-4 days. We decided to pause this financial request support and resume it after Ashadha. I went to Mayanamati Ashram with Bhuvan Brahmachari. Reaching there, I saw that people were leveling the area near the kitchen. I started working on it and stayed happy. When I returned, I found that my mother is not well. I thought that I cannot go for financial request now. My friend Kamini Sen suggested that I should go to Indeshwar, Paragana, which is nearby. A lot of rich and educated people live there, and it is on a higher place, so traveling during rains will be easier. As my mother's health improved within 2-3 days, we started with our travel to Indeshwar. We observed a trend during our trips related to financial assistance. Wherever we went with high hopes, we got a lot of roadblocks. But wherever we went as mere agent without much hopes, we got much more. We didn't get any proper welcome after coming here. Anyways, with a lot of support from Sri Lalit Mohan Dhar, we could collect around 40 rupees. After getting the news of dead health of my mother, I had to leave some tasks incomplete and had to return. At this point, the effort of collection of financial assistance for Mayanamati Ashram ended here. We collected around 1500 rupees. When I returned home, I found that my mother is almost dying and my brother Yari is also sick. I fell ill with high fever the next day. The next day, my mother died while chanting Thakur Maharaj's name. I could not do the last rites myself. I had not shaved and had not visited a barber during different ceremonies like marriage and last rites. I had considered some influential people for this. People did not like it, but they were not objecting it strongly. But after the death of my mother, they forced us to take services of a barber. As we were bedridden, we could not object to it. We had two options: either shave our heads or we will be pushed out of the society. We chose the second. With the help of our spiritual brothers and some influential members of the society, the last rites were complete
people were also complained to Thakur Maharaj through a letter about this topic. Thakur Maharaj had once disciplined Bhuvan Brahmachari because of a complaint from a householder. We had protested against it and had said that this complaint is full of lies. But Thakur Maharaj said, if there is a complaint, there must be some truth in it. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Akhi mage dosana, chitta mage chetana. Akhi mage dosana, chitta mage chetana. Akhi mage dosana, चित्त मागे चेतना. आखि मागे दर्शना, चित्त मागे चेतना. मन मागे भूलिबाकु, मन मागे भूलिबाकु, भव दुख जातना. मन मागे भूलिबाकु, भव दुख जातना. आखि मागे दर्शना, चित्त मागे चेतना. आखि मागे दर्शना, चित्त मागे चेतना. चिर मागे पद छुई, प्रणति ढालिबा पाई. चिर मागे पद छुई, प्रणति ढालिबा पाई. कर मागे करिबाकु, कर मागे करिबाकु, सब शुभ अर्चना. आखि मागे दर्शना, चित्त मागे चेतना. आखि मागे दर्शना, चित्त मागे चेतना. कान मागे सुनिबाकु, कंठ मागे गुणिबाकु. कान मागे सुनिबाकु, कंठ मागे गुणिबाकु. तुम गुण तुलना, तुम गुण तुलना. तुम ज्ञान गरिमा, आखि मागे दर्शना, चित्त मागे चेतना. आखि मागे दर्शना, चित्त मागे चेतना. प्रीति मागे अनुराग, भाव भिजानुभव. प्रीति मागे अनुराग, भाव भिजानुभव. प्राण मागे साधिबाकु, प्राण मागे साधिबाकु. तुम सुर साधना. आखि मागे दर्शना,
चित्त मागे चेतना आखि मागे दर्शन चित्त मागे चेतना लुभ मागे झरिबाकु तुम लागि झुरिबाकु लुभ मागे झरिबाकु तुम लागि झुरिबाकु जीव मागे तरिबाकु जीव मागे तरिबाकु तेजी सब कामना आखि मागे दर्शन चित्त मागे चेतना आखि मागे दर्शन चित्त मागे चेतना मन मागे भूलिबाकु मन मागे भूलिबाकु भव दुख जातना मन मागे भूलिबाकु भव दुख जातना आखि मागे दर्शन चित्त मागे चेतना आखि मागे दर्शन चित्त मागे चेतना चित्त मागे चेतना। Joy Guru. Part 1. An individual's prescribed duties constitute the principal practices meant to destroy the inherent qualities and actions. Through the practice of destroying inherent qualities and actions, the individual gains true knowledge. So in Hinduism, qualified differentiation based on an individual's inherent quality and the caste system is defined to keep the distinct differences in qualities and actions separate. If there was no caste system, everyone's qualities and actions would be the same. Depending on one's activity, they discuss the same. Had there been connection between caste to marriage, then there would not have been distinction in their respective qualities and actions. As a result, the upper caste should side with the qualities and action of the lower group, and the lower caste will lose their power of judgment. Distinct caste system has been defined. Many believe that keeping Shudras away from the study of Vedas as a hypocrisy of the Brahmins. This is not deprivation of other castes by Brahmins. It is in fact a sign of compassion of Brahmins towards Shudras. In short, three brothers work hard for a living. The youngest brother stays home and enjoys his food. There is no need of Shudras to work hard to gain knowledge. By serving the knowledgeable Brahmins, they will achieve everything. They will reach the same destination in the end as Brahmins. Jai Guru. ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ଆଜି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। as usual, I just say a few words ପରିଚୟ ପତ୍ର, ତାପରେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇ ନାଁ ଡାକିବେ ଭାଇମାନଙ୍କ ନାଁ ମା ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଠାକୁର ଅର୍ପଣ କରି
प्रथमे दुईटा कथा कह चाहूँगी परिचय पत्र विषय समथिंग नॉन ट्रेडिशनल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे गोटे कथा मन रखा पड़ो माने अपडेट ग्रहण करा पड़ो जे परिचय पत्रटा मुक्ति देवाक समर्थ नुहे मैंने परिचय पत्र करदे नीचे धाऊ चली ताहा नुहे परिचय पत्रटा केवल कागज खंडे मात्र कागज खंडे इसमें कहूँ जो आदेश जो रही जिनस रही प्रति ध्यान न देकी पढ़ला भाया आवृत्ति कला भाया पढ़ी तक कौन मूल्य ना गोटे छोट पिला धरतु गोटे 6 मासर कि 8 मास पिला गोटे आम $100 बिल दबा से $100 बिल कौन सी मूल्य बुझे नहीं पाटे पूरे कामुड़ी चिड़ी फोड़ी कहीं $100 बिल जहाँ गोटे कागज किसी प्रिंट होता जिन से $100 बिल जहाँ प्रिंट होती प्रिंटा काढ़ी दियो कागज खंडे सेमती परिचय पत्रटा जदि तारिटा लेखाई आम ध्यान नदबा कार खंडे तार किसी मूल्य नहीं आमर माने मुझे माने मो अनुभूति आसूची आम ठाकुर भक्त हाँ परिचय पत्र कौन सी आवश्यकता नहीं परिचय पत्र नक ठाकुर भक्त हो पार कि आध्यात्मिक उन्नति संघर प्रयोजन रही परिचय पत्र से ही आमको सूचे दौर आम जो परिचय पत्र खोलीदबा तो प्रथम देखा ठाकुर ठाकुर कहते जो मैंने मो ऊपर निर्भर कर बसीच मुझे हाथ धरी मुक्ति धाम को नहीं जी तुम ठाकुर सद्गुरु केवल ये विश्वास दरकार आवश्यक प्रथम ठाकुर कौन शक्ति से कौन करें आम कथा कहते आमर कर्तव्य कौन आमर कौन कमिटमेंट रहा दरकार जे निर्भरता थी दरकार सेकेंड बेटा हूँ कौन संघ आगे ठाकुर तापर संघ तापर व्यक्तिगत साधनार कथा व्यक्ति साधनार कथा आम जपरी कृष्ण आवाहन कर प्रति आमर जो श्रद्धा अच्छी आम मानकर मंत्र एक हो आम मानकर संघ एक हो आमर चित्त मन आम मानकर परस्पर श्रद्धा अपूर्ण हो संघ आमे 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 फाइनाली मु व्यक्ति विशेष मु जीवन थी पर्यटन देह को तुम सेवा विनियोग करी मु तुम निकट जहाँ प्रतिज्ञा करी प्राणपण प्रतिपादन कर चेष्टा करी जिते असुविधा पड़े मु हस हस बदन में सेवा निरत रही मु 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 मझे संघ गोटे गोटे ठाकुर गोटे गोटे भक्त मझे संघ संघटे काढ़ीदबा ठाकुर भक्त अलग होगले तो मन में आसपे जे कौन संघ को न आसी आम साधना कर ठाकुर पाइबुनि एकलव्य तो पाई एकलव्य पाई आम से भाया उत्तम अधिकार नुह से ठाकुर संघ देती ठाकुर कहते जाओ संघ गठन कर तेज मत पाइब देन ओनली तेज जा मत पाइब जानते आम अधम अधिकारी खाली गोटे कथा मुझे गोटे कथा कहना चाहूँगी समय हो संघ को आसने आमको केमी व्यवहार करा पड़ो ठाकुर बारंबार कहते मो भीतर प्रेम प्रीतिर संपर्क दरकार तुम प्रेम प्रीति संपर्क रख ये आम द्वारा हो ना मैंने ऑब्जर्व मुझे छुटिया छुटिया कथार आम कौन मैंने अन्य मन कष्ट दे दूसु आम उपदेश दिगला आमको जे कौन सी परिस्थिति राइट तो कहते कौन सी अवस्था गुरु भाई मान मन आघात देव ना गुरु भाई गुरु भक्ति कौन सी अवस्था आम बेले बेले एक्सक्यूज दे दूसु जे से एमती कले मुझे कहली एमती कले मुझे तो कहली छुटिया छुटिया कथा सिली सिली थिंग्स ठाकुर पादे किए धला फूल बदले नाली फूल देदेला धरुचु आम खाई बसला बेले किए टेकामली पकड़ न आंखु टेकी बसला धरवा आम शोला बेले किए मैंने बाँ पर दोष कि डाँप पे शोला फॉर सिली थिंग्स आम कमेंट दौचु भक्त मान दोष त्रुटि दर्शन करुचु मन दुख दूसु ये प्रेम प्रति संपर्क लक्षण नुहे जो नुहे
तापर छोट छोट कथा धरिक आम गसिप आरंभ करदे निज निज गसिप आरंभ करदे ये आम आध्यात्मिक उन्नतिर लक्षण मत रामतीर्थ गोटे समय क्विकली कहीदेवी रामतीर्थ गोटे ठाकुर मत लगे ठाकुर रामतीर्थ बहुत पसंद कर गुड़े बक्तृता को ट्रिट करते आज दर्पण में रामतीर्थ गोटे छोटिया कथा कहते आम जिते तले अच्छु से आम तल सब छोट छोट रास्ता खाल खमा सब आखिरी पड़ो जिते ऊर्धक उठीजु आ खाल खमा आखिरी पड़ो ना जिते ऊर्धक उठीजु से कहते ये जो बड़ बड़ कोठा बाड़ी देखुच सेगुड़ा नगण्य होते बड़ कोठा देखुच कि जिते ऊर्धक चलीज से कोठा तुम आखिरी पड़ोनी सब सामान सामान देखा तो आम ऊर्धक उठे चेष्टा करवा ठाकुर आदेश उपदेश मानिक चलिया चेष्टा करवा जदि आम कह भूल त्रुटि देखिलु संघरे आम कहबार अधिकार नहीं कर्मकर्ता को जनवा मुख्य सेवक से जनवा मुख्य सेवा सेविका जब कि तार प्रतिकार न कले कर्मकर्ता को जनवा कर्मकर्ता कौन करेंगे विचार करेंगे से आम ताकू नहीं गोटे मैंने आलोचना समालोचना कला बेलू संघ भितर प्रेम प्रीत संपर्क नष्ट हो ठाकुर कह संघ शक्ति प्रतिष्ठा कर आम संघ शक्ति दुर्बल कर निज निज भितर टणा उठरा होकर संघ शक्ति दुर्बल कर आदेश उपदेश को अवमानना कर अवमानना होले मो आदेश उपदेश को गुरु भली सम्मान प्रदान कर आदेश उपदेश को कहले संघ शक्ति गठन कर आम संघ शक्ति विखंडित कर संघ शक्ति विखंडित कले गुरु आदेश अवमानना कले आम उन्नति पदे वी आर गोइंग इन रिवर्स डिरेक्शन बैकवर्ड हम चल जाऊँ एनिवे समय हो तेणु भविष्य के विषय आलोचना करना चाहूँगी मुझे कारण केतरा भूल रही आचरण वीक कर दूसरा मुझे रोचे जय गुरु प्रथम विश्व रिक्वेस्ट कर मंडली आगे पैसा पत्र ग्रहण करेंगे भाई माँ मान ना पढ़े सरी भाई मान ना पढ़े माँ मान ना यंग आसिस्टेंट सेशन में पिला पैसा पत्र ग्रहण जय गुरु विषय थे जय गुरु आम परिचालन मंडल मेम्बर ना गुड़ा कहीदे ब्रजेन्द्र कुमार पंडा ब्रजेन्द्रनाथ पंडा तापर विजय कुमार साहू वृंदावन साहू ईश्वर चंद्र विश्वाल प्रभाकर बाई तापर सुब्रत कुमार नायक उषा अग्रवाल माँ तापर रश्मि चौधरी माँ ठाकुर जन के परिषद ग्रहण करूँ जय गुरु भाई मान ना पड़ुची अजित कुमार बेहरा भाई अनुप कालिया भाई अमिताभ दास भाई अश्विनी कुमार नायक भाई बरदाकांत नायक भाई विनय कुमार साहू भाई विश्वरंजन दास भाई विश्वजीत पति भाई विश्वजीत बेहरा भाई विजय कुमार उपाध्याय भाई देवाशीष दास भाई देवी प्रसाद दास भाई देवी प्रसाद सामल भाई ईश्वर चंद्र विश्वाल भाई ज्ञान रंजन दिवेली भाई किशोर सिन्हा भाई निहार रंजन नायक भाई पृथ्वीराज साहू भाई महेश प्रसाद चौधरी भाई रमा वल्लभ महापात्र भाई सानिरुद्ध सेनापति भाई सार्थक भाई सुप्रीत कुमार पट्टनायक भाई सुभाषिष दास भाई संदीप नायक भाई श्री शुभेन्दु कुमार भाई शिशिर कुमार पंडा भाई सौम्य प्रसन्न परिड़ा भाई स्वप्नेश्वर सुंदराय भाई पारिणी प्रसाद दास भाई त्रिनाथ पत्री भाई प्रवीर रंजन खुंटिया भाई प्रणवेश दास भाई ठाकुर प्रसाद नंद भाई एमती कि भाई मान लिस्ट हो 41
भाई माने परचपत्र ग्रहण कर आसन मंदिर सब लाइन अच्छा समस्ते ठाकुर को जन की गृहासन जो मैंने अच्छा परचपत्र ग्रहण करूँ। भाई ब्रिज अच्छी से तार बर्तमान ग्रहण कर ओके ब्रिज गोपाल पंडा भाई एवं परचपत्र ग्रहण करूँ। जय गुरु। या भितर खाली कहला माँ मान नाम पढ़ी दूसरी पूर्व खाली कहर अच्छे से परचपत्र लिखाई संघ सेवा पाली तारीख गोटे लिखाई तारीख रे तारे लिखे आपंकर संघ जो पाली डेटा जो होची सेटा आपण फिलअप करेंगे से अनुसार फिलअप करेंगे। संघ रे जहाँ सेवा नौ द्वितीय लाइन अच्छी जी जहाँ संघ रे सेवा नौ संगीत सेवा कि जहाँ भोगरंजन सेवा जहाँ सेवा नौ सेवा से निजे फिलअप करेंगे। जय गुरु। माँ मान ना डाकिली श्रीमती आराधना दास माँ, अंजना अरुक माँ, अंजलि नायक माँ, अर्पिता दास माँ, अमृता परिडा माँ, बनलता महांती माँ, बंदिता सिन्हा माँ, दीप्ति महापात्र माँ, इप्सिता साहू माँ, कल्पना दास माँ, मधुस्मिता खुंटिया माँ, मोनालिसा जेना माँ, पद्मगंधा साहू माँ, पल्लवी महांती माँ, प्रियंबदा पत्री माँ, प्रवीणा महापात्र माँ, रश्मि रेखा पंडा माँ, रश्मि चौधरी माँ, शिवानी द्विवेदी माँ, शिवानी महांती माँ, शिवानी साहू माँ, स्निग्धा साहू माँ, सुधांशुवाला जेना माँ, सुश्री संगीता सुबुद्धि राय माँ, संगीता नायक माँ, सुकन्या पंडा माँ, पल्लविता पटनायक माँ, स्मिताराणी बाई माँ, स्मिता राय माँ, सस्मिता पटनायक माँ, संघमित्रा नायक माँ, सोनाली पटनायक माँ, सोनालिसा महांती माँ, सोनिया महांती माँ, श्वेता राउत माँ, वेदमती नंद माँ, उदिता सुंदराय माँ, स्वाति शिवप्रसाद माँ। जय गुरु। माँ मान ना पढ़ाला ठाकुर जन की परचपत्र ग्रहण करूँ। जय गुरु। माँ मैंने कौन कौन कही मु ठाकुर बुझी पढ़ुची निर्देश तुमने सकले तुमने समस्ते मोर आश्रय ग्रहण कर इच्छा रही मत लक्ष्य कर चलीच तुमने समस्ते गोटे पथर पथिक तुम उद्देश्य एक इच्छा चेष्टा अभिप्राय एक तुमने कहीं एक हो पारना यह बड़ क्षोभर विषय मूल भूल अच्छी से तुमने तुमर संकीर्ण स्वार्थ बुद्धि एवं व्यक्तित्व विसर्जन दे महत हुआ महत नहेले यही महत उद्देश्य साधन कर पारे नहीं। कहूँ चाहे तुमने एक हुआ तुम क्षुद्र व्यक्तित्व और संकीर्णता त्याग कर तुम समस्त तुम सबू अभिप्राय इच्छा चेष्टा एकमुखी हो तुम मतिगति एक हो तुम जीवन लक्ष्य एक हो तुमने एक संघबद्ध भाव में मोर उद्देश्य साधन कर तुमने समस्ते तो मो शरण नहीं समस्ते मत देह मन समर्पण कर तुमने समस्ते तो मोर आरब्ध कर्म संपादन आत्मनियोग कर तुम गुरु पिता तुमने समस्ते मोर संतान तुमने कि गृही कि त्यागी समस्ते गोटे परिवार भुक्त गोटे गोष्ठी तुमने परस्पर संबंध में भाई भाई तेज तुमने कहीं एक हो पार ना तुम मध्य कहीं मतैनक मत विरोध द्वंद्व कलह घटब जाने समस्त रुचि और प्रकृति एक नुहे फल मतैनक हवा विचित्र नुहे कि मतैनक हो पारे मनोमालिन्य कहीं हम यही मनोमालिन्यर मूल कारण होए जार मत को जययुक्त प्रतिष्ठित करने उदग्र बासना करें आम चाहूँ आमरी मत रहू आमरी कथा रहू संगे
ସାଧକ ମାତ୍ରେ ହିଁ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଅଭିମତକୁ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ମନେ କରିବା କିମ୍ବା ତାର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅନ୍ୟାୟ। ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ହେଇପାରେ। ପରମତ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପରମତ ଯେମିତି ବିଚାର ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ, ସେମିତି ନିଜ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ପୁନଃ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ସତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯୋଉମାନେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମୟ ହେଇଗଲା, ଏଠି ରଖିବା। ଆମେ ଯିବା ହୋପଫୁଲି ମା ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିଲେଣି। ୟଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋର କାହାର ପ୍ରଥମ ଅଛି ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ଆଇସି ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ରେଡି। ମନର ଠାକୁର ଆସି ମନ କଥା କେରା କର, ମନର ଠାକୁର ଆସି ମନ କଥା କେରା କର, ମନର ଠାକୁର ଆସି କହିବି 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 ମନର ଠାକୁର ଆସି ମନ କଥା କେରା କର, ମନର ଠାକୁର ଆସି ଆୟୁ ଧନ ମନ ଚର ବାକୁ ଲାଗି ଜୀବନ, ଆୟୁ ଧନ ମନ ଚର ବାକୁ ଲାଗି ଜୀବନ, ବିହାରୀ ରେ ଦୟା ଚରଣ ଚରଣ କର, ବିହାରୀ ରେ ଦୟା ଚରଣ ଚରଣ କର, ମନର ଠାକୁର ଆସି ମନ କଥା କେରା କର, ମନର ଠାକୁର ଆସି ଶୁଣ ହେ ମନ ମୋହନ ମୁଦା ଥିବ ନୟନ, ଶୁଣ ହେ ମନ ମୋହନ ମୁଦା ଥିବ ନୟନ, ନବ କୁଠିବ ନବ କୁଠିବ ମନର ଠାକୁର ଆସି ମନ କଥା କେରା କର, ମନର ଠାକୁର ଆସି ମୁକ ଥିବ ମୁକ ମୋର କଣ୍ଠରେ ରଖିବ ସୁର, ମୁକ ଥିବ ମୁଖ ମୋର କଣ୍ଠରେ ରଖିବ ସୁର, ଏର ସଦାର ଥିବ ସୁପତି ନବକେ କଳ, ଏର ସଦାର ଥିବ ସୁପତି ନବକେ କଳ, ମନର ଠାକୁର ଆସି ମନ କଥା କେରା କର, ମନର ଠାକୁର ଆସି ତନୁ ହରାଇছে କର କରୁଥିବ লিঙ্গন, তনু হরাইছে কর করুথিব লিঙ্গন, অরূপ স্বরূপ চর চর অরূপ স্বরূপ চর
Manara Thakurati, Mana Kathai Sirakara, Manara Thakurati, Kahibi, 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 Akuharati, Kahibi, 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 Akuharati, Manara Thakurati, Mana Kathai Sirakara, Manara Thakurati. Jai Guru. Jai Guru and Yasmin. Today we're going to. Jai Guru Satyama, just a quick thing. Please go ahead and check attendance. Then we'll have young aspirants accept their Parichaya Patra. Then again you can continue after that. Okay. Yes, that's Jai Guru. So, as I said, we're going to start with our regular attendance, and then for all of you that have Parichaya Patra, hopefully you have that with you right now. If you don't get that, what we're going to do is we're then going to read through the list of you that have Parichaya Patra, and today you're going to accept that. So what you'll do is you'll take that and do Takara and come back. So when your name is called for that. And then we'll get into the regular sessions, which will be explanation of the song and what we regularly do. But we'll start with that. Okay, so for regular attendance, Aditi. Jai Guru. Jai Guru. And the Asma? Mazayuma Dasasti. Jai Guru. Aisi? Jai Guru. Jai Guru. Anjik? Jai Guru Mata देव टिके बोलना ही थी अभी join कर पाने. Jai Guru. Ansh? Jai Guru Masi आज टिके तारा अच्छी काम अच्छी बाहर अच्छी. Jai Guru. Ansu? माँ जय गुरु से तो बहुत ही पढ़ने ना जय Jai Guru. Arnav? Jai Guru. Jai Guru. Aram? Arush? Aryan? Jamu? Jai Guru. Jai Guru. Divyam? मैं दिव्य में join कर पाने. Jai Guru. Ma. Divyansh? Jai Guru. Jai Guru. Eva? हाँ जय गुरु से भी बहुत सी पढ़ने. Jai Guru. Jagras? Jai Guru. Jai Guru. Naisak? जय गुरु माँ Jai Guru. Pratyusha? Jai Guru Ma. Jai Guru. Satyush? Jai Guru Pratyush और Aswini जी. Jai Guru. Ma. Tanvi? Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat? जय गुरु माँ Jai Guru. Sarthak? जय गुरु माँ से तो काम मुक जाई छी. Jai Guru. Bhakti? Jai Guru. Jai Guru. Bobby? Jai Guru, he's absent. Jai Guru. Shruti? Shreya? Jai Guru. Jai Guru. Manu? Jai Guru. Jai Guru. Jimmy? Jai Guru. Jai Guru. Here. Suhani? Yukta? Jai Guru. Jai Guru. If I missed anyone, say so now. Okay, Jai Guru. Jai Guru and friends, as Fatima said in the beginning, today we are accepting our Parichaya Patras, our identity card. So I'm requesting Bharat Bhai to share a few words, then
we'll go to the names. Okay, but please be brief. Sure, Joy Guru Bhai. So since everybody is accepting Parjapatra, Brodev Bhai asked me to little bit give the essence of accepting Parjapatra. I think it's so first let me start with one thing is that all of you who are taking the step of taking Parjapatra, it's a pretty significant step if you really think about it. It's actually trying to get into a spiritual life. So you may be wondering what is the difference between an ordinary life and a spiritual life. The miracle of our existence is such there is absolutely no objective test you can do to distinguish between a spiritual life and a ordinary life or a life of any common person. There is absolutely no difference. In fact, somebody can be in a so-called in a spiritual mask, like for instance, if you think of Ravana, he came in the dress of a sage actually. Otherwise, Sita would not have crossed the line which Lakshman drew, and she would not have been abducted. But the Ravana came in the dress of a monk, like a sage, and she got tricked. So in the outside, somebody could be very spiritual looking, but inside maybe a devil. So objectively, you cannot prove anything. So for instance, somebody can be looking like a devil also. If you look at so Thakur's guru, Tantric guru, particularly the left-wing Tantric monks like Damakshata, he would look like a devil to anybody actually if he walks in the street, but inside he's an enlightened being. And it is actually the extreme cases, but if you look at even general people, absolutely there is no objective test you can do to find who is really spiritual and who is not. The simple reason being, spirituality is about soul and spirit, and soul and spirit doesn't have any attribute. It's pure beingness, it is pure awareness. Because it doesn't have attribute, you cannot make an objective test to know. So that is why the best thing is to remain non-judgmental until you really, really know about somebody. It's very, you would never know who is at what level of spirituality. A common person may be deeply spiritual, or he could be a completely ignorant person. There is absolutely. I can give you a simple example. If imagine a father is raising two kids in a very modest lifestyle, but the father knows he is a billionaire, but the people don't know where is his investment. All these two, let's say he has two sons, they don't know about his investment. Okay. One day he declared that I'm a billionaire, and after me, all you are going to be billionaires. But when he declared, one son is sleeping, one son is awake. But according to law, both are already become billionaires, because once the father dies or passes, his money is going to be between the two sons. But the one is sleeping, the one is awake. The one who is awake, he realized already that moment itself he is a billionaire. But the one who is asleep, he is still technically a billionaire according to law, but until he wakes up, he doesn't know that he is a billionaire. Remember this example. This is the subtle difference between, there is heaven and hell. Both have the same possession. They both will be, but one knows and one does not know. But they both are son. Outside the world, they will look them similarly, but one knows and one doesn't know. That's the difference between the spiritual world and non-spiritual. But it is a huge thing to wake up. It is a huge thing to wake up, because somebody could be in the dream, somebody could be in the sleep and the dream state and all these things. So the reason I'm bringing this, spirituality is about awareness. It's about how awakened you are. Okay. But in this world, there is an example where I can tell you that where spirituality comes to the front for some occasion. Okay. One of the greatest examples in this world, if you look at who is closest to spirituality, is actually a soldier in the battlefield. Okay. So Thakur has many times said, the life of a spiritual seeker is like
the life of a soldier. Because when you are a soldier, you are in the battlefield. You are in the highest state of awakening. Because any slight blink and you are dead. Okay? You slightly blink your eyes, you are dead. You are surrounded with enemy. You know that your life is at stake. The heightened state of awareness. You can just wake up any moment. You can run. You can do whatever is needed. Whatever is needed, you are willing to do because it's the battlefield. When you enter into spiritual life, that's exactly what happens. That's why a lot of people are scared actually to enter into spirituality. People like religion. People like religion because there is a comfort, and there is a God, there is somebody to take care, and they don't have to. But when you are into spirituality, you are completely naked. You are completely vulnerable. You are completely at the... So that is a huge stage to take. So let me tell you, there are... if you take that analogy, there is a beautiful analogy between spiritual life and life of the future. And when they take people into military, into defense, there are 6 commitments they take. Okay, I would briefly and remember that if you are trying to enter into spiritual life, which is the life of an awakened one, when you are a life of the awakened one, there is although you have everything at risk, but you gain 2 things. Okay, most important thing. It ends your suffering and it gives you the freedom of the life. A lot of people don't know either of them. Okay, many people accept their suffering until it hits them hard. They think of what is wrong going on, and then many people don't have any idea of what a freedom of life is. They are psychologically bonded, physically, emotionally, and so many ways. Okay, so spirituality is the most important pursuit anybody can take, and in Indian spiritual tradition that's called moksha or liberation or enlightenment. That's the quest of everybody. But we can have, I can tell you a few things we can learn from the life of a soldier. That's the commitments he makes to when he goes to defense, and that we can learn a lot from that. Okay, the number one thing is the courage. Okay, the courage to enter a spiritual life. Courage is not the absence of fear. It's not the absence that you don't afraid. Rather, it is the strength to face it, face the fear. That is what every soldier goes through. It is not that they are not afraid that they can be killed, but rather the strength to face the fear. Okay, they take the proper training, they take the proper, intelligence. So it takes the courage to, in spiritual world, what it means is it takes the courage to do the right thing when the wrong thing would be easier. The life of lethargy or easiness of things will be easier, but you take the courage to do the right thing. Second one, sacrifice. Yeah. So, bhai, you have another couple of, 4-5 minutes, right? Or no, I think Fatima has prepared something to discuss also, so she should be as well. Yeah, I think we can wrap it up. In future, let's not merge a couple of things so it doesn't actually go well. Since it is better to on one thing and then do a little bit. So, the second thing is the sense of sacrifice. So a spiritual pursuit, particularly when you are associated with the Sangha and the thing, it's always it is the looking for that the leader of your own. Okay, that's sacrifice means in a spiritual term. You take care. You first look into the needs of others above yours. That's what a soldier does actually. Okay, and then the third thing is patriotism. Patriotism is offering a devoted loyalty to your nation. For instance, you are a spiritual association and you feel loyal about it, that you are devoted to the Sangha and through which you are getting the spiritual knowledge and your growth is happening. But at the same time, if you are truly patriot about your own nation, you also understand how important it is for other nations. So it is not that you just take care of your Sangha and you think, but you also believe that the other people who are believing in the other ways, they have also their own way. Just like US puts the peace force elsewhere, you will also stand for
their integrity and their thing. And then the citizenship, also you follow the law of the nation and all these things. If you are really going through a spiritual life, you abide by the rules of your association and stuff. The fifth one is called integrity, okay, which is very important. It is actually every soldier just thought about that. It's about obeying, doing the right thing when even if you are not watched. That's the integrity. So, for instance, you tell something that this is what you are going to do. Whether you are doing or not, nobody may see, but you know that you are responsible for your own thing. Okay. And the last one, and the most important one, is the commitment. The commitment is following through what you promise. Okay. That is the thing which every soldier promises, that this is what I am going to do for my nation, and they stand by it. And spiritual life is, a spiritual seeker has to have that commitment that no matter what, I am going to follow through what I am promising to do. Otherwise, you will not make any progress spiritually. Okay, so I just wanted to bring this together because these are the important things if you really want to pursue a spiritual life. And taking Parichaya Patra is actually a symbol, is a token, is a badge of honor to carry, which you will say that I am in the path of spirituality. Okay, with this thing, I wrap up today's discussion, and please, Swati, go ahead and continue with your discussion and the program. Jai Guru. Jai Guru, do you want me to read out the names, or is Mr. Josai going to read the names? I think you have the list. Yeah, I think if you have the list, you would go, right? Yeah, I have. You sent me the list. So what we're going to do, so for those of you, there's 16 of you with Parichaya Patra, again, all of you should have the physical card, and when your name is called, I'm just going to read the name. When you hear your name, you're going to go and do Pranam Chakra with the Parichaya Patra and accept it. Here's the start. Ansh, Aryan, Anhik, Vedprakash, Sarsak, Shashwat, Siddharth, Divyant, Shriyant, Saraswat, Naitik, Asmita, Devangi, Shreya, Tanvi, Samyashri. Hopefully, you all have, at the time are currently making this time to do Patra and accept your Parichaya Patra. And for those of you that don't have Parichaya Patra currently, thinking about it, it is something, as Mother I explained, it is something that can act as a symbol of your commitment to following this path and to chakra. So for those of you that are thinking about and haven't accepted Parichaya Patra yet or signed up to get it yet, you can think about it through this year, and hopefully there are even more of you that have Parichaya Patra next year. With that, a little time left. We're just going to begin so I did send this out last night. Hopefully you all can put this in front of you. We are going to continue, and we're going to start a brief introduction to Chapter 4 of the Gita, which we've been reading the last week of each month. There's not much going on there in this, since we wouldn't have as much time with Parichaya Patra also happening. So last time we did our review of Chapter 3, which is Karma Yoga. We are now going to go into Chapter 4, which, depending on the translation of the English translation of Gita, is referred to as
has the chapter for Injanios or knowledge. I've seen it translated as the chapter about the ultimate truth. But basically, this is the chapter in which Lord Krishna starts explaining the ultimate truth, how knowledge is gained, where it comes from, and so on and so forth. And then he will expound on that in later chapters and how to get there. But he talked about in chapter 3 a passive knowledge and a passive work. And this begins the discussion on the passive knowledge. So to start, Manu, do you have the reading in front of you, and can you read the first 6 verses of this for us? Manu, are you there? I can read the first 6 verses. Okay, thank you. Bhagavad Gita, chapter 4, part 1. Lord Krishna said, as Papa's eternal science is revealed to the Sun God, who taught it to him, Vice Vidhu Manu, who led unto his son, King Ishvaku. O subduer of enemies, stately kings thus received the science of yoga in a continuous tradition, but with the long passage of time it was lost to the world. The same ancient knowledge of yoga, which is the supreme secret, and today revealing unto you, Vibhuti, my son, as well as my devotee. Arjuna said, we were born so much after the sun god. How am I to understand that in the beginning you instructed the science to him? The Supreme Lord said, both you and I have had many births, O Arjuna. You have forgotten them, while I remember them all. Although being birthless, imperishable, and immutable, the Lord of all living entities, being so situated, I appear in this world in my original transcended form by my internal glory. Yeah, thank you for reading that. So before we start, this is just introducing some concepts, and we'll go more into depth later. Does anyone have any questions about anything from those first 6 verses? Okay. If not, we'll just start the discussion. So this first verse, if you don't recognize some of those names, it's just going through a lineage from the sun god and then son of the sun god and grandson. So you can look into this on your own time, but it's just saying it went from the sun god to then later iterations down that line of basically they were king's royalty, and also in some areas they're referred to as king sages. So they have this knowledge, and they were also royal, and they have the duties aligned with that. So in the second verse, it refers Lord Krishna refers to a continuous tradition of the science field. And what does that mean to be a continuous tradition? How is this knowledge being passed on? And how then were people receiving this knowledge? What does it mean to be a continuous tradition of knowledge? How is this knowledge being passed on? Or how was it being passed on? Jaiguru, this knowledge is being passed on because students, they look up to the guru to teach them all of this. Jaiguru? Jaiguru. And even though we see this that this knowledge was at some point, have we received some of this knowledge?
I guess is to say, are we receiving knowledge in the same way that Lord Krishna is describing? Jaguru, we have received knowledge through books that Thakura wrote to us. Jaguru. Right. So we receive this knowledge now. So even if we're not necessarily receiving it from that line, we are receiving this knowledge right now by reading this book, but then also we're receiving knowledge in the same way. All knowledge that we have, we're receiving from Thakura's teachings, which he has written books for us, and he's not in the physical body with us right now, and we read those books and we gain that knowledge from him, still following that direct pathway from guru to student or disciples as we are. So that's continuous, and that's something that should be familiar to all of us. So the Lord Krishna says, right, that he is explaining this all to, so we haven't gotten quite what this truth is, but we'll get into it. But he's saying that he's going to share this supreme secret, this knowledge, to Arjuna, because Arjuna is his devotee and his friend. So he, in this case, is going to act again as guru and giving this knowledge to his devotee in the same way that we've experienced this. So then Arjuna asks him, from what he knows of the sun god and what he knows of Lord Krishna. Krishna was born so much after the sun god. So how is it that that Lord Krishna was able to teach the sun goddess chronologically? Lord Krishna was born so much later. How is it that he was there in the beginning? So what's the answer to that? Jamu, how is it that Lord Krishna was able to teach all of this to the sun god? Jaguru, I'm not exactly sure. Maybe it was through his experiences in his life. Jaguru? Yeah, so maybe not the method, but I guess what about Lord Krishna? So Arjuna's confusion is, he's saying, well, you're being, you said you were sun god. So how were you there? So what about the nature of Lord Krishna allowed Krishna, or the Supreme Lord? Yeah, it was because it was saying that he's had many births, and yeah, it was just talking about him having multiple lives. Right. So, I mean, we have this concept, right, of Supreme Lord, and we've discussed this before, and we'll get into this again. But it's this idea that he says, I've had multiple births, so I've been here before. I remember it. You don't remember it. We all have this. So I'm there, and I remember being there. You're not going to understand that. I remember that right now. And so we'll get into more of the nature of Lord Krishna with that, but it's because of those previous births, those previous appearances, that he was able to do that. So then, what does this mean about Lord Krishna? He talks about this in verses 5 and 6. Who is he? We refer to him as, he's God. He's incarnated upon the earth multiple times. We'll talk about why. But what does that mean about Lord Krishna and his existence through time? Nitik, how do we understand Lord Krishna and his existence now, in the past, and in the present? What ability? Can you repeat the question? Yes. So Lord Krishna says, I've been born multiple times. I remember all of these things. So what do we know about God, our Lord Krishna, that we have to accept that he's been here through all of these times and has all of this knowledge? Jaguru, we have to accept that Lord Krishna and Thakura in general is infinite. So they're always present, wherever you are. Jaguru, right. So he's always there in some form. That's something we've discussed before, and he's going to go into some of the mechanics of that
and explain to Arjuna so he can ultimately understand that. So with this, we're out of time. And like most of the ways I use that today. Jai Guru. Jai Guru. I'm grateful I have my Baba Vinamaya. In 2 weeks and 3 days, I will be going to Washington, D.C. with my classmates. I'm very excited about this opportunity as I never went to D.C. and going with friends makes it even better. Last week, I had to take a science state test, which is very stressful as it determines how advanced my science class is going to be in high school. In the upcoming weeks, I'm going to be very busy. I have to take 2 more state tests, one for reading and writing, and another one for math. These two tests are also as stressful as they determine my placement in English and math classes in high school. Besides tests, I am helping out with my school's play, and I'm very excited to have this opportunity as I collaborate with my classmates and teachers to create an enjoyable experience. Some people might know on the 22nd of April, a unique holiday is celebrated among the Hindu community. This holiday is called Akshaya Tritiya. People believe if you make an investment during this holiday, it will bring success and good fortune. Akshaya means unlimited to represent the unlimited prosperity on this day. And Tritiya is the birthday of the lunar fortnight. Because of this holiday, I want to wish everyone good luck and success in their investments. Jai Guru. जय गुरु प्राण ठाकुर भक्त भाई माने और यंग एस्पिरेंट्स आज मोर संघ पूजा पाली ठाकुर कृपा वर्ष पर पुणी आउ थे संघ पूजा पाली मिली आम आसन मंदिर आसी पार्छु ये पाली जोग देवाई एमती है कि यहाँ अक्षय तृतीया माने केमी जानी ठाकुर कृपार केमी संजोग है जे अक्षय तृतीया दिन माने आम जोग दे पार्लु तापर संघ पूजा पाली मिल पाला ठाकुर भक्त भाई मान को मागुचे आज आमर परिचय पत्र दिन आम पुणी नुआ वर्ष पुणी आम निजक पुणी आउ थे ठाकुर पाखे प्रतिज्ञाबद्ध हेलु कि केमी परिचय पत्र जहाँ जहाँ लिखाई केमी मानिकी चलू ब्रज भाई बहुत सुंदर भाव बहुत सारा जिनस विषय कहले आ गोटे पर्टिकुलर जिनस एम्फसाइज देले ता कहया पूर्व परिचय पत्र आम जहाँ प्रतिज्ञा गुड़ा करूँ से गुड़ा आमर जिते षड़रूप अच्छी आम से दमन करने आम से प्रचेषा चली था सबुदिन सकाଳେ आम पढ़ू आम ठाकुर पाखे प्रतिज्ञाबद्ध हो कि एबे ठाकुर आम कर्ममय जीवन को जाऊँ आई जिनस गुड़ा जमी आम द्वारा न हो किंतु कौन हुए कि कर्ममय जीवन को गले मात्रे के आम देखू कि माने से केते गुड़ा जिनस सब सब बैक एंड फोर्थ चली था जिते षड़रूप अच्छी ताठू सबुठू मत लगे कि सबुठ वर्स्ट जिनस है आम मन में जो क्रोधटा आसे बहुत समय आम देखु वर्क फील्ड रे कि आम पर्सनल लाइफ रे कि समटाइम ये आश्रम कि केते आम गति ओपिनियन मिसमैच हो जाए आमर मन में क्रोधटा आसे आम क्या किसी गोटे कहीदे आईटा मत लगे वर्स बिकज आम निजर तो आम क्षति कलु से क्रोधान्वित होगी आम गोटे आम जो क्रोधरे हो आम गोटे नॉन इलॉजिकल डिसीजन नौ किंतु आम आउ गोटे पर को जो कहीकि ता मन में बहुत प्रकार आघात दे था आउ यार किसी लाभ ना माने मु देखी मो फर्स्ट कंपनी थी सेमती एमती गोटे सिचुएशन हुए कि बहुत जन लीडर्स मैंने था गोटे एमती काम करेंगे कि आपको लगे टोटली इलॉजिकल मैंने कहीं कर मन में बहुत राग आसो यू माइट से समथिंग एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू आर इन द लॉस सो बहुत जन कहते कि जहाँ कहूँ तुम लीडरशिप पाइबार अच्छे फॉलो करी चल तुम यू कैनॉट से एनीथिंग अगेंस्ट देम राइट एनीवे मैंने मु कंपनी चेंज कली आई लर्न ए लॉट फ्रॉम दैट लार्ज कंपनी एंड एबे स्मॉल कंपनी आई एम ट्राइंग टू फॉलो कि मु कौन सी जिनस जो मोर मन चलुनी माने इलॉजिकल हो जाउची जो माय माइंड इज नॉट वर्किंग एट एनी मोर आई शुड नॉट से एनीथिंग आमर कहुई बाक संयम विषय में बहुत एम्फसाइज दिखाई दिनलिपि कहुई कि तुम बाक संयम आज कल कि ना से जिनसा सब मन रखा पड़ो फिर जिते से रागटा आसे मैंने मन था कि मुझे गोटे कहीदेवी क्या कहीं रागटा रिलीज करी किंतु व्हाट आई हैव ऑब्जर्व पर्सनली कि जदि मुझे 45 सेकेंड्स काउंट करी अराउंड 1 मिनिट से रागटा ठंडा पड़ जाए धीरे धीरे आउ माने कहया दरकार ना कि एंड एट द एंड ऑफ द डे
where possible solution is always when your brain is working, when you are logical enough to take the steps, do that. राग मन रे कौन कि आम ब्रेन टा काम करेनि से लॉजिक रही आउ गोटे जिन जो ठाकुर कही क्या मन में आघात देवनी कहीं आम सब भूली जाऊ कि समस्त भितर ठाकुर अच्छा आम आम से कहीदू कि क्या मन में कष्ट दबनी कि कहीदू हाँ ठीक अच्छे आम मत जहाँ ठीक लगला मुझे कहीदेली कि हाँ ना दिस इज अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दिस शुड बी हाउ इट शुड बी डन एंड मुझे कहीदेली आ क्या मन में आघात आसला कि मैं रियलाइज करूनी कि भीतर भी ठाकुर अच्छा समस्त भीतर ठाकुर अच्छा ना ये जो कटक सम्मेलन है 17-18 हजार ठाकुर जो भक्त आसे कि एक मन एक प्राणगत हो समस्ते केते डिसिप्लिन है कि पाखे बसते ठाकुर समस्त पाखे न था हो पार न तार मोर गोटे पर्सनाल अनुभूति सम्मेलन जाकि मु 2 सप्ताह ठाकुर को सम्मेलन जो आश्रम आसन सजा सेवार ठाकुर सेवा नहीं तो एमती कौन है राति आमर तो हुए आसन सजा सब लेट राति आउ टायरिंग थाए तो थे गोटे राति 11:30 है भाई मैंने टायर्ड माने जी मुख्य कहना भाई आम जानी आपने टायर्ड हो गला लेट्स कंटिन्यू लेट्स पुश तो मोर एमती इच्छा है कौन है कि मुझे भाविली कि जो स्वप्नेश्वर भाई आमको सब भूतगत कहते मुझे गुड़ाक कहि आसन सजा सेवा भितर भाई मानक बधे एंटरटेनमेंट हम किंतु मु जानी नथली कि मु जो भूत कथा कहबार से जो भाव विनिमय हम से मु ठाकुर को जानी कि ठाकुर समस्त अच्छा सर मुझे जानी नथली मु आरंभ कली सब भाई मैंने खुशी हेले शुणिक वाह भाई मैंने एमती सब एक्सपीरियंस हाँ एमती जन अच्छा सेमती कहती से भूत देखी पारती इंटराक्ट कर पारती नल तो समस्त आखि खोलीगला तापर गोटे गोटे कर अलग भाई मैंने बाहर एक्सपीरियंस जन कौन एक्सपीरियंस तो जड़े भाई कहले मैंने भूत कहले नहीं कहले आम ठाकुर स्ट्रेट माने ठाकुर स्ट्रेट देखा है तो जड़े भाई कहले छोटिया भाईटा माने +2 हार्डली पढ़ुवे माने आसन सजा सेवा करती थे कहले भाई आम राति 12:30 आसन सजा सेवा करूँ आम इच्छा लगे पाखे गोटे पंख अच्छी से ठाकुर पद्म आणिक दबु माने पद्म पत्र आणिक दबु कि जो बाटटा जंगल बाटटा अंधार पूरा तो से कहले आम जहाँ करके दबु खेत जंगल एमती अच्छे तो गले अंधार जमती पाखे पहुंचे लगे कि भूत गोटे गोड़े भूत गोड़े गाड़ी खराब हो गला यहाँ मैंने बहुत असुविधा है मैंने बहुत असुविधा आसिकी ठाकुर को पद्मपुत्र पूरा देखिए देखिले भी कमी आसन सजा कर फ्रेश देखिए किंतु ता परदिन से भूतटा आउ गोटे क्या गोटे मनीष माने देहरे लगिला सी जो देहर लगिला ता भीतर जो आवाज माने कहला कि मुझे जो पिला गुड़ा मारिदेवा को बहुत चेष्टा करी भीतर किए गोटे धड़ा बाबा आसिकी आमको मत एत रोकीदे मुझे किसी भी क्षति कर पारे से भावतु माने ठाकुर सेवा कर मनटा कौन ठाकुर सेवा आ ठाकुर स्वयं आसी प्रोटेक्ट करले से ही समय आउ जड़े भाई कहले भाई भाई आम तो माने ठाकुर आमको पूरा बचे उद्धार कर देछन ठाकुर प्रत्यक्ष आसिक उद्धार करछन ना कौन भाई स्टोरी कहले कि मोर भौणी को बाहा ताको के गुणी करके तार गोटे स्टॉकर बॉयफ्रेंड थिला ताको गुणी करके गोटे रात माने अलग जगह को नहीं जाइए माने से माने कई फैमिली जानी ना ताकू लगुच कि मैंने से झीटा कौन हुए कि भाई मत बुझे गुणी थाए गुणी एफेक्ट 3 मास जाए था 3 मास हुए तो से झील को जाकि पचारे तू तू कौन एमती पलि आसु से कहे कि ना ना मु ठीक कर माने से गुण गुणीटा अच्छी तो से मुझे ठीक कर माने जहाँ भी कर छाड़ी आसे ठीक कर किंतु माने तो जी हजबैंड थे से रागी गले अवश्य रागी जी कहीं एमती केमती हो पार माँ को बहुत कहगला माने केते फैमिली केते माने सहिले समस्त कहले तुम झील एमती तुम झील सेमती तुम माँ सेमती माने केते कौन सहिले तो ठाकुर स्वयं माँ पागला हो गले माने न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गला ब्रेन ठाकुर स्वयं आसिकी कहले देख मु प्रतिज्ञा कर तो सामने कि मु तो झील से पिला सहित बाहागर करी ठीक 3 वर्ष पर से पिला को से पिला आउ गोटे झील को बाहागर पाए रेडी होता अलमोस्ट कि ठीक 3 वर्ष पर से पिला को ठाकुर निजे धमक चमक देकर से आसिकी दरवाजे पहुंचिकी कहले मु आपन झील सहित बाहागर हेबी एबे गोटे छुआटी से मत देखले फोटो वोटो एनल आ से भाई एक भाव विनिमय थिला इथर सम्मेलन कि कटिगला ये कि माने ये जो एक्सपीरियंस ठाकुर आसिकी तुमर दुख सुख सब बेले ठाकुर जो वर्तमान विद्यमान अच्छा सेटा आमर मन में आसे ना आ ठाकुर समस्त सहित अच्छा मुझे जो यही भाव विनिमय किसी शुणिली आउे जो रियलाइज कली कि माने आपण आगे बसतु कि पछरे बसतु को भी लाइन बसतु
देखिए से 17,000 पचर भक्त जो मैंने बसुच्च से जो ठाकुर भावधारा अच्छी जो ठाकुर प्राण जो व्याकुल होची सब सामान यू जना जाए कि ठाकुर समस्त पाखे अच्छा मन आघात देले ठाकुर कष्ट पाइबे सेटा जो आम करने चाहूँ मन में क्रोधटा आसूँ वी हैव टू से जय गुरु मे बी वी हैव टू वेट फॉर फ्यू मिनिट्स मे बी 1 मिनिट एटलिस्ट कि आम कौन करने चाहूँ आम ब्रज भाई निर्देश देले कि जहाँ कि आम देखुचु आम क्या मन डायरेक्टली न कहीकि जड़ेबा कहीं परिचय पत्र जहाँ आम प्रतिज्ञाबद्ध हलु परिचय को न जड़े अन्य पाखे कले विजय भाई मक्ष सदृश हम तो आम ताकू फॉलो करवा आज आम परिचय पत्र दिन आम शिखा आउ थे से वाक्य को पढ़ा अनुगत करवा आउ ठाकुर आम भिक्षा करुँ ठाकुर कृपा करूँ जमी आम जहाँ पाखे कमिटमेंट करुँ सब बेले पालन कर भाई गोटे खाली कथा कहूँ विषय गोटे 30 सेकेंड तो परिचय पत्र कहूँ ठाकुर प्रार्थना करुँ आम संघ एक हो अंतर प्रार्थना हवा दरकार प्राण आसा कथा प्रकृत ठाकुर वो संघ एक हो हम केवे भी किसी माने विभेद न आसे समस्त अनुरोध करुँच प्राण सहित ठाकुर प्रार्थना करूँ घर खंडन खंड हो जय गुरु जय गुरु प्राणर ठाकुर भाई माँ और पिला माने अनुभव बहुत भल भाव कले केतटा जिन लिखी कही बोली माने हमर संघ बाहर माने आम जदि नॉर्मल सोसाइटी देखा आम वी जस्ट run after some success, right? Success means like some external validation, right? हमें पिला बेले मेजर करछे सक्सेस आम बापांकर केड़ा बड़ गाड़ी केड़ा बड़ घर, राइट? तापरे टिके बड़ आम निजर केते बड़ गाड़ी केते बड़ घर केते बड़ कौन सब, राइट? Then later part we start measuring success in terms of our kids and grandkids achievements. Likewise that just keeps on going. तले आमे संघ से भी है कि आमे जदि सही स्केल टाको फॉलो करिया then what's the difference? The ideal is basically आमे कहि देबा कि आमे ठाकुरंकर केते भई पड़िछे ठाकुरंकर भावधारा रे केते निजको परिचालना करि परछे किंतु that's very easier said than done. सेटा आम संघरे रहा केते मात्रा तो होची किंतु दैट आल्सो स्टार्ट्स टेकिंग द सेम एग्जैक्ट फॉर्म कि आमे को सेवाटा करिवा, राइट? आमे को सेवाटा करिवा जो थरे कि हमर बड़ बड़ केंद्र नेतृत्व सहित हमर रहिबो संपर्क, राइट? आमे वी स्टार्ट अगेन मेजरिंग द सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट scale, but the principle hasn't changed. Our core thought process has remained exactly the same. तेणु मु खाली ठाकुर पाखे एति प्रार्थना करी आम जो ठाकुर सेवा करुचे से जेकोसी क्षुद्र रु क्षुद्रतर सेवा हो कि कौन सी पॉलिसी मेकिंग की इफेक्टिव डायरेक्शनल सेवा हो आम जमी आमर निजर आत्म गौरव प्रतिष्ठा टाको पूरा भूली जावा. बट आज सेड इट्स लाइक इजियर सेड देन डन. खाली आम ठाकुर पाखे एति प्रार्थना करिपरिबा से आमको टिके आदर्श संघ से भी गृहस्थ करिपारंतु सेतिपई आमको शक्ति भक्ति दियंतु. मैं एतिकै मोर भाव विनिमय शेष करुछि. जय गुरु.
जयगुरु आज द्वितीय अधिवेशन ये शेष होगा जाऊँगी यापर ठाकुर को मु मध्याह्न भोग मध्याह्न भोग निमंत्रण करुच्ची भक्त भाई माँ पिला प्रसाद पाइबा निमंत्रण करुच्ची आमर आज संध्या पूजा 6:30 समय नित्य पूजा प्रतिभा करेंगे से मुझे ठाकुर समस्त भाई माँ और पिला निमंत्रण कर जय गुरु। सुहानी अच्छी जय गुरु सुहानी Jai Guru. I invite Susi Thakura, Bai Ma and young aspirants for the upcoming puja session held on April 30th at 11 a.m. Eastern Time. Jai Guru. जय गुरु परम ठाकुर महाराज भाई माँ और पिला माने आसंता संघ पूजा रविवार संघ पूजा पालिया सुहानी निमंत्रण कले आउ प्रभाकर भाई आमर अच्छी आउ ठाकुर महाराज आपण को निमंत्रण सादर निमंत्रण जनाऊँ आसंता संघ पूजा आपण उपस्थित रही आमको आपंकर अमीय बाणी शुणी कृतार्थ करेंगे आम को आशीर्वाद करेंगे आसंता संघ पूजा भाई माँ मैंने पिला समस्त को निमंत्रण जनाऊँ समस्त योगदान करी सेवा आमर सेवा आमको सेवा सुजोग देवे आउ पूजा टी साफल्यमंडित करेंगे जय गुरु। जय गुरु आज मोर युक्तार विश्व भाईकर पाली सेवा पूजा पाली थिला पूजा रे बहुत सारा अजाणतार जानतार भूल त्रुटि रही जाइए से ठाकुर पाखे समस्त भाई और माँ पाखे क्षमा प्रार्थना करुचे आ प्रार्थना करुचे जमी पुनर्बार न हो। जय गुरु। दया चरणी एहि बेदाना दयामय श्री चरणी एहि निवेदना निरंतर तव नाम करिबि स्मरण देव निरंतर तव नाम करिबि स्मरण एहा छड़ा न रहिब ईतर कामना एहा छड़ा न रहिब ईतर कामना एहि मात्र शिक्षा मोर एतिकी प्रार्थना प्रभु एहि मात्र भिक्षा मोर एतिकी प्रार्थना तुमे प्रभु मुहि दास एहि अहंकार तुमे प्रभु मुहि दास एहि अहंकार एकमात्र जीव प्रबल संसार एकमात्र जीव प्रबल संसार एथि लागी जेबे काले न मिले मुक्ति एथि लागी जेबे काले न मिले मुक्ति तथापि रखिबि मने
अनंत त्रौपदी प्रभु तथापि रखिबि मने अनंत त्रौपदी तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते पड़ी जाही ताही तुम्हारी इंगिते प्रभु पड़ी जाही तुम्हारी इंगिते ध्वंस करे रचनार अभिनव रूप ध्वंस करे रचनार अभिनव रूप देखी देखी आसी जीव असल स्वरूप प्रभु देखी देखी आसी जीव रूप मिलाई न पारे देवे तब जंत्रेश्वर 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 तब नमे बाई जीवी भंगा बिना मोर प्रभु तब नमे बाई जीवी भंगा बिना मोर शुणुबा न शुणु केहि शिव अहंकार शुणुबा न शुणु केहि शिव अहंकार तुम्हें प्रभु मुहि दास एतिकी संसार 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 प्रेममय श्री चरणे करे निवेदन प्रेममय श्री चरण करे निवेदन प्रेममय श्री चरणे करे निवेदन प्रेममय श्री चरणे करे निवेदन तुम जय गाउथिबि हे सारा जीवन प्रभु तुम जय गाउथिबि हे सारा जीवन तुम जय गाउथिबि हे सारा जीवन तुम जय गाउथिबि हे सारा जीवन प्रभु तुम जय गाउथिबि हे सारा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु 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 जय जय जय
Jai Guru,
Guru, Jai 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 Jai Guru, 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 Jai Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru, Jai 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 Krishna ठाकुर Samananda Bole Bhagwan Shri Shri Guru Maharaj Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. गुरु पुणी थे रिमाइंड कर दूसरी जे सम्मिलनी सभा में अप्लाई करेंगे मु दुजन सहित कथा कहूँ से कहले जे मे मासर फर्स्ट कि सेकेंड वीक से डिस्ट्रीब्यूशन आरंभ करेंगे सेवा संगीत सेवा डिस्ट्रीब्यूशन एनिवे आपण मैंने मे 6 सुधा सेवा अप्लाई करूँ कारण मे 7 रे आमर अच्छी परिचालन कमिटी मीटिंग से परिचालन कमिटी मीटिंग रे विभिन्न मुख्य सेवक सेविका मान नियुक्ति कर डिसाइड कर मे 7 परिचालन